श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज महाशिवरात्री असल्याने रात्री 9:15 वाजता बाबांच्या पालखीची मिरवणूक गावातून निघेल। मिरवणूक परत आल्यानंतर शेज आरती शुरू होईल। आज महाशिवरात्रि होने के कारण रात 9:15 बजे बाबा के पालकी की शोभा यात्रा गांव से निकलेगी। शोभा यात्रा वापस आने के बाद शेज आरती शुरू होगी। रात्रि 12:30 वाजता गुरुस्थान मंदिरात रुद्राभिषेक पूजा होईल। रात 12:30 बजे गुरुस्थान मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा संपन्न होगी। आता धूप आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब धूप आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा सौख्यदातार देवा चरण रजातने जाबादासा विसावाय भक्ता विसावाय आरती साई बाबा जाळूने आनंद सद्वरूपे रायनंद मोमो सुजनादावे निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा जयामणी जैसा भाव दया तैसा अनुभव दाविसे दया गना ऐसे तुझे माव आरती साई बाबा तुम जे राम ध्यान हरे समुद्र दिव्यता अगाध तब करनी मार्ग दावे से अनाथा दावे से अनाथा आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर दत्ता दिगंबर आरती साई बाबा 8 दिवस गुरुवारी भक्त करी देवारी प्रभु पद भावया भया देवारी भया देवारी आरती साई बाबा
माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे ते आता तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छिता दीन चातक निर्मल तोय निरसूत पादावे मानवाया संभळा बोले भाग आपोले भाग आरती साई बाबा सौंददातार देवाय जननार रातरी द्रावा दासावे सावा भक्तावे सावा आरती साई बाबा लवतवते विकराळा ब्रह्माणे माळा विषकंठ काळा त्रिनकरे ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तके वाळा हे दुनिया निर्मळ नळवाहे दुळगुणा जय देव जय देव जय शिव शंकरा स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावरती ओ वाळू तुझ करपुर गवरा जय देव करपुर गवरा भोळा नयने वेजाळा अर्धांगे पार्वती सुमनांचा माळा विभूतीचे उधळला शिखकंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उमा वेल्लाळा जय देव जय शिव शंकरा स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझ करपुर गवरा जय देव देवी नंद सागर मंथन पै गेले श्यामाजी अवचिता हळहळे उठले शिरवासुर बने प्राशन गेले नीलकंठना प्रसिद्ध झाले जय देव जय शिव शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावरती ओ वाळू तुझ करपुर गवरा जय देव व्याघ्रांबल बने वर्धन सुंदर मदनारी पंचानन मन मोहन मन जन सुखकारी जग कोटि जय वीर वाचे उच्चारी रघुपुरी नाम दासांतरी जय देव जय शिव शंकरा स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझ करपुर गवरा जय देव शिर्डी माझे पंढर मोरा साई बाबार 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 साई बाबार बाबार शुद्ध भक्ती चंद्र भागा भाव कुंडली कलागा कुंडली कलागा भाव कुंडली कलागा याहो अवघेदन करू बाबांशी वंदन साईंची वंदन करू बाबांशी वंदन करू म्हणे बाबा साई भाव माझे आये भाव माझे आये भाव माझे आये हरे लोटांगण मंदिर चरण डोळ्यान बाहेर रूप तुझे ज्ञानंद बोध त्वमेव वाणिन मनेव नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मा भावप्रकृतिस्वभाव करोमि यद्यत् सकलपदसमय नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं
रामनारायणं कृष्णरामोर्णं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंत मुखाचा श्रीनेशे जगाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा पुरावे मनी पद्मनादे जवावे पुरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगातारुणी मायकाला नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वसे दो सदा भयास तरीना तिसे अत्यलोकांबरी दो जनाना परियंतरी ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वराला धनागन महामानवाचा नरासार्थका साधने भूत साचा धरो साई प्रेमा गळाया अंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा करावे करे सान अल्पज्ञाना करावे अमानत तुंबो निघाला मुखे गाल प्रेमे खराग्रास वाला नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुराधिक जाचा पदावंतिताते सुखाधिक जाते समानत्व देते प्रयागादि तीर्थे पदे नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुराजा पदावादा गोपवादी सदारंगणीचे स्वरूपे मिळाले करे रास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे एक जावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे भवे मोहनी राजा तारी आधा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ऐसा ये बासाई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्वै व्यापक तो निधारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा ये काशे स्नान जप प्रतिनिवशे कोल्हापुर भेषे निर्मल नदी तुंगा जल प्राचे निजरामाहुर देशे ऐसा ये थोड़े लोग तसे माम करिए त्रिशूलन मरोधारे भक्ता वरदसदा सुखकारी देशिल मूर्ते चारी ऐसा ये आये बारुबा जपमाला कमंडलो मृगशाला धारण कर नागजटा मुकुट शोभतो माता ऐसा ये तत्पर तुझाया ध्यानी अक्षय त्यांचे सदनी लक्ष्मी वास करी दिनरदनी रक्षसे संकट वारुणी ऐसा ये क्या परिधान तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया गुरुनानंद सुखे गाया नाम से हरि गुण गाया ऐसा ये साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व
श्रुतिसारा अनुसयात्रि कुमारा बाबाये सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दघनं जगत्संभवस्थान संहारहेतु स्वभक्ते जयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवतमहं समिदभं समार्तनमेत्यं मनोभागतीतं मुदिर्ज्ञानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्बोधिमगनार्जितानां समादाश्रितानां समत्येयानां समुद्धारनाथं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदानीमरुक्षस्य मूलाधिवासात् सुदास्ताभिनन्दे तमप्यप्रियन्तं तरुकल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्ष सदस्याधिमूले भवतभावबुद्ध्या सबर्यादिसेवां ऋणां पूर्वतां भूतिमुक्ते प्रदत्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अनेकाश्रुतातरङ्गलीलाविलासे समावेशृतेषां नवास्वत्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदां मे श्रमाणाममेवाभिरामं सदा सज्जनैः सुदं सर्णवदवे जनामोदनं भद्रभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनार्थं पुनीतं प्रभोहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं श्री साईश कृपानिधे खिलरुणान् सर्वार्थसिद्धिप्रदा युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं धाता विभक्ताक्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटा सम्प्राप्तोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमलान् ज्ञानच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकामयुरध्रुवं प्रभो माययोपहतचित्तशुद्धये चिन्तयाम्यमहर्निशं मुदा शरत्सुधांशु प्रतिमं प्रकाश कृपात्मपात्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तामपपाकरोतु उपासनादैव साईनाथ सवैर्मयोपा सनिनाशुतस्त्वं रमे मनोर्मे तव पादयुगमे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धा अनेकजन्मार्जितपापसंशयोर्भवेद्भवद्वा दशरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरुदयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतभूतचित्तास्तकपादसेवनरतः सतताञ्जभक्त्या संसारजन्यद्विरतौ धमनिर्वदास्ते कैवल्यधाम परमं समवानुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरसन्मना सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवं रुषो मम प्रियाम्बिका मदपरिवितायि रुषो मम प्रियाङ्गना प्रियसुतात्मजाये रुषो भगिनी बन्धुहे स्वसुर
सासुबाई रुसो न दत्त गुरु साई मा मजबरी कधी रुसो पुसो न सुनवाई त्या मदन भ्रातृजाया पुसो पुसो न प्रिय सोय रे प्रिय सगे न ज्ञानी पुसो पुसो सुरधना सगा स्वजन नाथ बंधो पुसो हरि न गुरु साई मा मदबरी गदे रुसो पुसो न बला मुरे तरुण रुद्धये ना पुसो पुसो न गुरु धाकुटे मदन थोर साने पुसो पुसो न जभरे पुरे सुजन साधुये ना पुसो बरी न गुरु साई मा मदबरी गदे रुसो रुसो चतुर तत्त्वमे विबुध प्राज्ञ ज्ञाने रुसो रुसो हि विदुषी स्त्रिया कुशल पंडिताये रुसो रुसो महिपति यति सजगतापसी रुसो न दत्त गुरु साई मा मजबरी करे रुसो रुसो कवि ऋषि मुनि अनग सिद्ध योगी रुसो रुसो ये गृह देवता निकुल ग्राम देवी रुसो रुसो कल पिशाचये मलिन डाकिनी रुसो न दत्त गुरु साई मा मदबरी गदे रुसो रुसो मृग खग कृमि अखिल जीव जंतो रुसो रुसो विदप प्रसरा अचल आपगाधि रुसो रुसो कपवनाग्निवार अवनि पंचतत्वे रुसो न दत्त गुरु साई मा मदबरी गदे रुसो रुसो विमल केन्द्रा अमल यक्षिणी रुसो रुसो शशि खगाधि गगन तारकाये रुसो रुसो अमर राजये अदय धर्मराजा रुसो न दत्त गुरु साई मा मजबरी गदे रुसो मन सरस्वती सबल चित्तते रुसो रुसो बपुनि शाखिला कठिन काल तो रुसो रुसो सकल विश्वये माये तो ब्रह्म गोला रुसो न दत्त गुरु साई मा मदबरी गदे रुसो विमोल मनुने हसो मदन मत्सराये रसो पदाभिरुचि उल्लसो जनन कर दमेना भसो न दुर्गधुति चादसो अशिव भाव मागे खसो प्रपंच मनाए रुसो दृढ़ विरक्ति चेते खसो गुणाचे गृणानसो न च स्पृहाक साची असो सदैव हृदये वसो मनसि ध्यानि साई वसो
पादे प्राणायामो रसो निखिल दृश्यवादिसो न दत्त गुरु साई मा उपरिया चले लारुसो हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय दत्त देवा सानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न देहनकं महिमान सदत्त यत्र पुरवे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सवे कामान् कामकामाय वैया कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति श्रावराज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारवेष्टमराज्यं महाराजमाधिपत्यमयत्सबन्धपर्यात् ईस्यात् सार्वभौमः सार्वा विशान्तादात् पदार्थात् दैवै समुद्रपर्यन्ताया एकराळितदप्पे सकलोको विजितो मरुतः परवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविश्वतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदयति श्रीनारायण वासुदेव सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हरि ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च वंदे देव उमापतिं सुरगुरो वंदे जगत्कारण वंदे पन्नगभूषण मृगधर वंदे पशूनां वदे वंदे सूर्य शशांकगहनिनयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकर कैलासराना शिवचंद्रमौळी फणीन्द्रमाता भ्रुकुटे धराळी कारुण्य सिंधु भवदुःखहारी तुझवीन शंभो भजको न तारी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। गन्धर्वस्माभ्यशमावसुः परिदधात् विश्वस्यारिष्ठय्य जजमानस्य परिधिरसग्निरीडईडितः। सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः।
चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरक्षतान् समर्पयामि अहिरिव भोगैः व्रजयति बाहुञ्जायाहेतिं वरिबाधमानः हस्तकनोऽपि समापयोनार्पितवान् पुमान् पुमाकुसंवरिबात् विश्वतः सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः हरिद्रा कुङ्कुमं नाना परिमल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि ओकदीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूमनीः असमा इव सजिद्वरेभिरुदाः पार इष्णमः सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयामि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुरयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि अथ नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसीदन्तारिक्षकु शीर्ष्णोर्द्यौः समवृतोदो पद्भ्यां धूम्रदिजः क्षोत्रादधालोकाम् अकल्पयन् अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवा शिवभक्ता च स्वदेशे भुवनत्रयो चतुरस्त्रमण्डलं मृतमा तदुपरि नैवेद्यमातृनिधायेतो गायत्रीमन्त्रेणो पात्रान् सम्प्रोक्षयेतो ऋतं मर्तेनो परिघिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय समाः ॐ अपानाय समाः ॐ यानाय समाः ॐ उदानाय समाः ॐ समानाय समाः ॐ ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय समाः ॐ अपानाय समाः ॐ यानाय समाः ॐ उदानाय समाः ॐ समानाय समाः ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। श्री साईबाबांच्या दरबारात आपले सहर्ष स्वागत आहे। एक महत्वाची सूचना, समाधी मंदिरात दर्शनाला जाताना आपापले मोबाईल फोन्स आणि कॅमेरा स्वतः बरोबर न ठेवता कृपया संस्थांच्या लॉकरमध्येच जमा करावे। तसेच गर्दीमध्ये प्रत्येकाने आपले स्वतःचे खिसा, पाकिट, पैसे आणि इतर चीज वस्तूंकडे व्यवस्थित लक्ष द्यावे। विशेषतः स्त्रियांनी आपापली छोटी मुलं आणि दागिने काळजीपूर्वक सांभाळावीत। श्री साईबाबांची कृपा आपल्यावर सदैव आहेच। धन्यवाद।
ओम साईराम। श्री साईं बाबा के दरबार में आपका सहर्ष स्वागत है। एक जरूरी सूचना, समाधि मंदिर में दर्शन को जाते समय आप